Okay, good morning, students. I hope you all are great and revised your previous chapter. Today, we are going to start our chapter 9, which is Artificial Intelligence and Robotics. In this chapter, we will be going to learn about the technology, artificial intelligence, and robotics. So, without wasting any further time, let's understand the chapter. The name of our chapter is Artificial Intelligence and Robotics, and the topics which we will discuss in this chapter are subfields of AI, difference between AI, ML, and DL, robots, composition of robots, and types of robots. Now we have an amazing thought. We learn wisdom from failure much more than success. We have an activity which says write yes or no against the given questions. Does the computer work very fast? Yes. Do humans work very fast? No. Does a computer instruct human? No. Do human beings instruct a computer? Yes. Does computer make mistakes? No. Do human make mistake? Yes. Can a computer take decision? No. Can a human take decision? Yes. Now, based on the above questions, आपको ये find करना है that who is more smart, human or computer, and why. Write your answer in the given box. So do this activity where we have answered certain questions. आपको identify करना है कौन ज़्यादा smart है और क्यों, and write that here in the given area. In this chapter, we shall learn about AI and robotics. Then Kavya says, Hey Mayank, what is robotics? He replies, Robotics is the science and technology behind the design, manufacturing, and application of robots. He says, Oh, it means we shall explore many new things of AI. Then he says, Yes, yes, beside robotics, you will learn the subfields of AI such as machine learning and deep learning. Let us begin. She says, I am eager to learn these things in AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो पोजेस करती है होती है बाय मशीन्स स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम एआई इम्पार्ट्स इंटेलिजेंस टू द मशीन सो दैट जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं वो वर्क कर सके ऑपरेट कर सके एंड रिएक्ट कर सके लाइक ह्यूमन बींग्स एंड दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन रियल टाइम सीनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो यूज करती है स्मार्ट सॉफ्टवेयर टूल्स को टू प्रोवाइड सिमेटिक इंटेलिजेंस टू डिवाइसेस and machines just like humans do. Software understand करता है business scenario, analyze करता है real time data, makes decision, perform tasks and give responses accordingly. AI के subfields क्या क्या होते हैं? Given below are the technologies जो derive करती है advancement in the field of AI. First is machine learning. तो हमारी ability है to learn and get better at tasks through experience is a part of human being. That means जो human beings होते हैं they learn from their past experiences to get better in the future. So we were born, we know almost nothing for ourselves, but जैसे ही हम learning start करते हैं, we become more capable every day. But did you know that जो computers हैं, they can do the same? Yes, using machine learning technique, जो computers हैं, वो भी learn कर सकते हैं from their past and can perform good in future. तो मशीन लर्निंग एक सबसेट है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक एबिलिटी कंटेन करता है टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस रेदर देन जस्ट इंस्ट्रक्शंस ये ऑटोमेटिकली लर्न करता है एंड इम्प्रूव करता है लर्निंग फ्रॉम देयर आउटपुट मशीन लर्निंग एनेबल करता है कंप्यूटर्स को टू लर्न हाउ टू गिवन टास्क how to do a given task without being programmed to do so. Just as your brain uses experiences to improve a task, in the same way computers do. डीप लर्निंग एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग ही है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ट्रेन करता है हमारे कंप्यूटर्स को टू लर्न फ्रॉम एक्सटेंसिव डेटा सेट्स इन अ वे जो सिमुलेट करता है ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस ये एक इंस्पायर्ड वर्जन है ऑफ फ्रॉम न्यूरॉन्स विच आर नथिंग बट ब्रेन सेल्स डीप लर्निंग यूज करता है मल्टीपल आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का ये जो न्यूरॉन्स है ये अरेंज होते हैं इन सच अ फॉर्म ऑफ लेयर्स आउटपुट ऑफ एवरी लेयर इज द इनपुट टू द नेक्स्ट लेयर यानी कि हर लेयर का जो आउटपुट है वो दूसरी लेयर के लिए एज एन इनपुट कंसीडर होता है डिफरेंसेस बिटवीन एआई एमएल एंड डीएल पीपल ऑफन टेंड टू थिंक दैट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है ये सब सेम है सिंस दे हैव कॉमन एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल सिरी एक एप्लीकेशन है ऑफ एआई मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग so how are these technologies related आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साइंस होती है ऑफ गेटिंग मशीन्स टू मिमिक
द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। मशीन लर्निंग एक सबसेट होता है एआई का जो फोकस करता है of getting machines to make decisions by feeding them data. On the other hand, deep learning क्या है? ये भी एक सबसेट है of machine learning जो यूज करता है concept of neural network to solve complex problems. So, to sum it up, artificial intelligence, machine learning and deep learning are interconnected fields because artificial intelligence अपने आप में एक एबिलिटी है. देन हमारे पास क्या आती है? डीप लर्निंग जो एक सबसेट है एआई का, और मशीन लर्निंग सबसेट है डीप लर्निंग का. Machine learning and deep learning feed artificial intelligence by providing a set of algorithms, neural networks to solve data-driven problems. However, AI जो है वो restricted नहीं है to only machine learning and deep learning. It also covers vast domain fields जैसे natural language processing, computer vision, robotics, expert systems, object detection and many more. तो AI जो है वो खाली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे आके नहीं रुकता, वो और भी वैरायटी ऑफ फील्ड्स के साथ वर्क करता है. व्हाट इज रोबोटिक्स? रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स एक ब्रांच है ऑफ साइंस जो फोकस करता है ऑन लर्निंग अबाउट क्रिएटिंग रोबोट्स और मशीन जो वर्क कर सकते हैं. यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है रोबोटिक्स फील्ड का वो है टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स जो असिस्ट करे ह्यूमन को इन अ वेराइटी ऑफ वेज. इट इज द स्टडी ऑफ रोबोट्स. रोबोट एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है जो फॉलो करती है कमांड्स को एंड डज वर्क दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट. ये वो काम करती है जो ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करता है. इन टर्म, रोबोट इज कॉइंड फ्रॉम स्नेश वर्ड रोबोटा विच मीन्स लेबर एंड रोबोटनिक मीन्स वर्कमैन. तो रोबोट्स को डिजाइन किया गया है टू परफॉर्म टास्क दे आर ऑटोमेटिकली और बाय रिमोट कंट्रोल. रोबोट्स रिक्वायर करते हैं पावर सोर्स to function. It needs to gain its energy through solar charging, electric charging और battery charging. इन सारी चार्जिंग से उनको एनर्जी मिलती है एंड दे वर्क डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क इट इज डिजाइन टू परफॉर्म. तो वो किस तरीके की चार्जिंग लेगा ये डिपेंड करता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क वो रोबोट परफॉर्म कर रहा है. Robots have the following example. Human made does not occur in nature. So it is manufactured, that is human made, does not occur in nature. It is controlled by a computer. It can sense its environment. It can respond to instructions. एडवांटेजेस क्या क्या है रोबोट्स के? रोबोट्स कभी भी बोर नहीं होते, वो अपना सर्टेन टास्क फास्टली कंप्लीट करते हैं और इफेक्टिवली कंप्लीट करते हैं. रोबोट्स आर डिजाइन्ड एंड बिल्ड टू परफॉर्म देम विद हायर एक्यूरेसी. रोबोट्स कैन वर्क इन एनवायरनमेंट विच आर अनसेफ फॉर ह्यूमन बींग्स जैसे इन द न्यूक्लियर और केमिकल इंडस्ट्री. Robots do not have same environmental requirements that humans do as lighting, air conditioning or noise pollution, etc. Robots have some sensors, actuators जो ज़्यादा capable है than humans. Disadvantages क्या है robots की? Robots can only do what they are told to do. That is, they cannot improvise. उनको जितना कहा गया है वो बस उतना ही काम करेंगे. The use of robots can create economic problems if they replace human jobs. ह्यूमंस के ह्यूमन बींग्स की जगह पे रोबोट्स आ जाएंगे तो ह्यूमंस के लिए जॉब खत्म हो जाएंगी. रोबोट्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर टू फंक्शन. रोबोट्स कैन नेवर इंटरेक्ट लाइक ह्यूमंस एज दे लैक एम्पैथी व्हिच इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक्स. रोबोट्स का क्या क्या यूज होता है? रोबोट्स के पास भी एक वाइड वेराइटी है जो हम यूज करते हैं. केसेस दैट मेक देम आइडियल टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर. सम ऑफ द यूजेस ऑफ रोबोट्स आर एज फॉलोज. They can be used to perform tasks quickly with higher accuracy and consistency. ये help करता है automation of process में that usually takes more time and resources. They can be used in tasks that are difficult for humans to handle, such as diffuse bombs, hazardous waste या फिर कोई toxic chemical, etc. Robots work करते हैं continuously and give better productivity than humans. कुछ टास्क है जो कंसीडर्ड होते हैं laborious and repetitive. They can be handled easily by robots without fatigue and break. Working conditions can be improved and the safety hazards can be reduced within factories and production lines by introducing industrial robots. They help करते हैं हमारी to build items जैसे vehicles, appliances. Some are used as assembly lines. Composition of robots. रोबोट्स को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की जरूरत होती है जो कंट्रोल करते हैं एंड पावर द मशीनरी. इसेंशियली एन इलेक्ट्रिक करंट.
फॉर एग्जाम्पल एक बैटरी नीडेड होती है टू पावर अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ रोबोट्स. सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट्स आर गिवन बिलो. एक होता है बॉडी और फ्रेम. तो जो बॉडी है या फ्रेम है वो कोई भी शेप या साइज का हो सकता है. स्पेशली जो बॉडी फ्रेम होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द रोबोट. द रोबोट्स आर डिजाइन मोर फॉर फंक्शन देन appearance. Now, mechanical parts. Robots can be given the shape of human beings or can be designed to suit the task they are required to perform. Mechanical parts include करते हैं motor, wheels and other parts जो उनको turn, lift, move कराने में मदद करता है in various ways to complete the task. These are also called actuators. फिर आता है मैनिपुलेटर. मैनिपुलेटर जस्ट लाइक ह्यूमन आर्म. तो दे आर मेड अप ऑफ सेवरल जॉइंट्स एंड लिंक्स. इनका हम यूज करते हैं टू इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड वर्ल्ड अराउंड देम. So they are also helpful for moving or reorienting objects from their environment without direct contact by human operators. एंड इफेक्टर अलाउ करता है रोबोट्स को टू फिनिश कैरिंग आउट देयर टास्क. रोबोट्स इन फैक्ट्रीज ऑफन हैव इंटरचेंजेबल टूल्स जैसे पेंट स्प्रेयर्स एंड ड्रिल्स. सर्जिकल रोबोट्स मे बी इक्विप्ड विद स्कैपल्स एंड अदर काइंड ऑफ रोबोट्स कैन बी बिल्ड विद ग्रिपिंग क्लॉज or even hands for tasks like deliveries, packing, bomb diffusion, etc. कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ रोबोट इक्विवेलेंट होता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन. ये कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रोबोट. ये बताता है रोबोट को कि कैसे उसको यूटिलाइज करना है अपना स्पेसिफिक कंपोनेंट. सिमिलर इन सम वेज हाउ द ह्यूमन ब्रेन सेंड सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क. फिर आते हैं सेंसर. सेंसर प्रोवाइड करते हैं फीडबैक जो बेस्ड होते हैं रोबोट्स की सराउंडिंग्स पे, विच इज देन सेंट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू. सीपीयू फिल्टर करता है इस इंफॉर्मेशन को थ्रू द रोबोट्स प्रोग्रामिंग एंड डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन लॉजिक. द सेम कैन बी डन विद द वैरायटी ऑफ इनपुट्स और ह्यूमन कमांड. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रोबोट. तो रोबोट इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर बिकॉज it is already everywhere in the world, from our houses to Amazon warehouse to automobiles, assembly lines, and space shuttles. With the development of AI, robots have become even more important and powerful. They will be used in driving cars, delivering goods, helping around in the house, and even exploring other planets for us. Let us learn about different types of robots. सबसे पहले आते हैं डोमेस्टिक रोबोट. तो डोमेस्टिक रोबोट या फिर हाउस होल्ड रोबोट्स होते हैं जिनको हम अपने घरों में यूज करते हैं. इंक्लूड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कोई भी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, रोबोटिक पूल क्लीनर, स्वीपर, गटर क्लीनर एंड अदर रोबोट्स दैट मे डू होम चोर्स. उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक रोबोट्स. एंड सम सर्विलियंस एंड टेलीप्रेजेंस रोबोट्स कैन बी यूज्ड एज हाउस होल्ड रोबोट्स इफ दे आर यूज्ड इन दैट एनवायरमेंट. फिर हमारे पास आते हैं ऑटोनोमस रोबोट. ऑटोनोमस रोबोट जो होते हैं वो सेल्फ सपोर्टेड होते हैं. ये प्रोग्राम को यूज करते हैं जो उन्हें प्रोवाइड करता है क्या, अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड द एक्शन और परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग. यहाँ पे वो सराउंडिंग के बेसिस पे डिसीजन लेके परफॉर्म करते हैं. यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दीज रोबोट्स ऑफन लर्न न्यू बिहेवियर. ये स्टार्ट करते हैं विद अ शॉर्ट रूटीन एंड अडेप्ट करते हैं अपने रूटीन को टू बी मोर सक्सेसफुल इन द टास्क दे परफॉर्म. हेंस जो मोस्ट सक्सेसफुल रूटीन है वो रिपीटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल रूम्बा वैक्यूम क्लीनर विच यूज सेंसर्स टू रोम फ्रीली थ्रू आउट अ होम. फिर आते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर रोबोट. सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को हम बॉट्स भी बोलते हैं. दे आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कैरी आउट करते हैं टास्क autonomously. For example, a chatbot. तो chatbot एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सिमुलेट करता है conversation both online and over the phone. Is often used in customer service scenarios and they can either be simple services जो answer करता है questions with an automated response or more complex digital assistant that learn from user information. सोफिया एक ह्यूमन लाइक रोबोट है जो क्रिएटेड है बाय हैंसन रोबोटिक्स इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन एंड फर्स्ट रोबोट इनोवेशन एम्बेसडर फॉर यूएनडी. फिर आते हैं हमारे पास ह्यूमनॉइड रोबोट. ह्यूमनॉइड रोबोट एक टाइप ऑफ रोबोट है जो रेप्लिकेट करता है ह्यूमन बॉडी को. ह्यूमन बींग्स जैसा दिखता है. दे आर डिजाइन टू लुक लाइक पीपल एंड दे हैव मैकेनिकल अपीयरेंस. फॉर एग्जांपल सोफिया, एटलस, रोबियर एटसेट्रा. इंडस्ट्रियल रोबोट्स परफॉर्म करते हैं सेम टास्क रिपीटेडली विदाउट एवर मूविंग. ये जो रोबोट्स है ये वर्क करते हैं इंडस्ट्रीज इन विच जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है ऑफ परफॉर्मिंग डल एंड रिपीटेड टास्क.
suitable for robots. Industrial robots कभी भी tired नहीं होते. It will perform their work day and night without ever complaining. They are articulated arms specially developed for such applications for welding, material handling, painting and others. फिर आते हैं मिलिट्री रोबोट्स. मिलिट्री रोबोट्स का यूज होता है मिलिट्री पर्पसेस के लिए सच एज लॉ एनफोर्समेंट, सर्च, रेस्क्यू फील्ड. मिलिट्री रोबोट्स इंक्लूड करते हैं बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन रोबोट्स एंड रिकनेसेंस ड्रोन्स. ये इंक्लूड करते हैं ग्राउंड सिस्टम्स जैसे एंटीवियर रोबोट्स, पैकबॉट. दे आर डिजाइन टू असिस्ट ट्रूप्स इन कैरिंग हैवी गियर. सिक्योरिटी रोबोट्स कम विद ऑटोनोमस मोबाइल सिस्टम्स जैसे कोबॉल्ट. फिर आते हैं फ्लाइंग रोबोट. फ्लाइंग रोबोट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट पॉपुलर रोबोट टाइप्स. दे कैन फ्लोट ऑन एयर using their plane or bird insect like wings and balloons. For example, airplane robots, drones, bird inspired wing flapping robots, balloon robots, etc. नेक्स्ट इज मेडिकल रोबोट. मेडिकल रोबोट जो होते हैं ये रेफर करते हैं हम टू डिवाइसेस एंड सिस्टम्स जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मदद करते हैं टू ट्रीट मेडिकल कंडीशन, स्ट्रीमलाइन हॉस्पिटल वर्कफ्लोज, ऑफन इक्विप्ड विद सेंसर्स, इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी एंड टेली मैनिपुलेटर्स. ये हाई प्रिसीजन मशीन्स होती हैं जो एम करती हैं पेशेंट के आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए एंड रिड्यूस करती है ह्यूमन एरर. A full cycle of application from diagnosis and patient take care to surgery, rehabilitation, surgical robots. एग्जाम्पल्स है फॉर एग्जाम्पल ये एनेबल करते हैं dexterity beyond human capabilities as well as minimally invasive approaches, while robots prosthetics restore functions by sending brainwave transmission to a artificial limb. फिर आता है एजुकेशनल रोबोट. एजुकेशनल रोबोट रोबोटिक टीचिंग को बोला जाता है जो एड्स डिजाइन टू एनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल सेटिंग. ये टेंजिबल प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. ये क्रिएट करते हैं ज्यादा एंगेजिंग क्लासरूम्स विद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड इंटरेक्टिव लेसन्स. फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट सिस्टम्स टू सिमुलेटर्स एंड ड्रॉइड्स. ये हाईली प्रोग्रामेबल मशीन्स होती हैं जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ में आती है और यंगर ऑडियंस को कैच करते हैं. कुछ ह्यूमनॉइड मॉडल्स होते हैं जो सर्व करते हैं टीचिंग असिस्टेंट, पर्सनल ट्यूटर, स्मॉल ग्रुप लीडर्स एंड क्लासरूम पीयर्स. दे आर इक्विप्ड विद इमोशन perceiving sensors and assist students in their social skill development. India's latest educational robot is IRIS, a humanoid IT teacher, AI teacher developed by Makers Lab EduTech in collaboration with Thiruvananthapuram's KTCT Higher Secondary. Let's revise the chapter. Artificial intelligence is the simulation of human intelligent processes by machines, especially computer systems. Machine learning एक subset है of artificial intelligence AI, which has the ability to learn from experience. Deep learning is inspired from neurons, which are nothing but brain cells. AI is not restricted to only machine learning and deep learning. Objective of robotic field is to create intelligent machines that can assist humans in a variety of ways. Robots can sense its environment. Robots consume a lot of power to function. Manipulators are just like human arm. Sensors provide करते हैं feedback based on robot surrounding, which is then sent to the CPU. Autonomous robots are self-support. Let's do the exercise of the chapter. First is pick the correct option. Which of the following is known as robot's brain? Controller. Which of the following is a branch of science that make machines think like humans? Artificial intelligence. Sophia is an example of humanoid robot. So now Cobalt is an example of military robot. Next is fill in the blanks. Dash is a subset of AI, machine learning. Airplane robots, drones, balloon robots are example of flying robots. Robots are controlled by computer. Dash are the agents that can perform the instructions given by human personal assistant. That's true, true, false. Sensors provide feedback based on the robot's surroundings. True. Deep learning uses multiple artificial neurons. True. Domestic robots operate independently. False.
Humanoid robot is a type of robot that replicates a computer. False. Industrial robots can do also used in factories environment for manufacturing applications. True. So students, this was a complete chapter about artificial intelligence and robotics. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again and also learn exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.